प्रोसेसर हमने यूज़ किया है AMD Ryzen 5 3400G। इस प्रोसेसर के अंदर आपको इंटीग्रेटेड वेगा 11 ग्राफिक मिलेगा, जिसकी मदद से आप अच्छी खासी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है गीगाबाइट A320। इस मदरबोर्ड पर आपको डिस्प्ले के लिए 2 पोर्ट्स मिलेंगे, एक DVI और एक HDMI, और ये काफ़ी चीप मदरबोर्ड है। इसके साथ आपको M.2 स्लॉट भी मिल जाते हैं। ऑन बोर्ड है मदरबोर्ड पर आप फास्ट स्टोरेज के लिए NVMe भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रैम हम यूज़ करेंगे Corsair 8GB DDR4 3000 MHz, और इस तरह की हमने 2 रैम को इस्तेमाल किया है, यानी कि 16GB हमने यूज़ किया है, क्योंकि हम इस PC पर वीडियो एडिटिंग भी करने वाले हैं। प्राइमरी स्टोरेज के लिए हमने किंगस्टन 250GB NVMe यूज़ की है। और ज़्यादा स्टोरेज के लिए हमने सीगेट बैराकूडा 1TB हार्ड ड्राइव भी यूज़ की है। पावर सप्लाई में हमने यूज़ किया है एनटेक की तरफ से आने वाला VP 450 वाट का पावर सप्लाई है, और किसी भी PC बिल्ड में आपको अच्छी से अच्छी ब्रांड का पावर सप्लाई यूज़ करना चाहिए। आप चाहे तो कूलर मास्टर या फिर कॉर्सेयर का भी पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं इस PC बिल्ड में।